Welcome back, guys. Now we're going to be doing Radioactivity 5054, question 1, paper 2. Yeah, we just started paper 2. You can buy these past papers on Inkscribe. ये मेरा Instagram है, आप Inkscribe बना. You can go follow me and message me that you want to buy the past papers, and they will be delivered at your home in 3 to 5 days, like the usual time period takes for a past paper to arrive at your house. So yeah, the main upside of these past papers is that you can solve these questions simultaneously with me. मेरे साथ साथ आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? और अगर आपको किसी क्वेश्चंस में मुश्किलात आए तो यू कैन जस्ट गो टू माय स्पेसिफिक प्लेलिस्ट और आप उस क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हो. इट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो उसकी स्पेसिफिक वीडियो बनी होगी, राइट? सो एज सिंपल एज दैट. लेट्स कंटिन्यू. Question 1. Figure 9.1 shows the main parts of a nuclear reactor. Control rod है, coolant है, moderator है, fuel rod है. So I will tell you the purposes of that later on in this video. The fuel rod contains uranium-235, which can undergo nuclear fission. Nuclear reactor, of course, it will undergo nuclear fission, not fusion. Fusion होती है on the planet. I mean, not the planets, the stars, right? Describe the process of nuclear fission that occurs in the fuel rods. Your description should include the role of neutrons in the process. तो एक तो उन्होंने पूछा है कि the process of nuclear fission हमने describe करनी है, and हमने जो role है neutrons का हमने वो भी describe करना है. So basically this is what the diagram looks like. I'll explain the diagram to you. The process starts with slow moving neutrons colliding with a uranium-235. So एक slow moving neutron है, it collides with a 235 यूरेनियम. यूरेनियम 235 के साथ इसकी कोलिजन होती है. जब इसकी कोलिजन होती है यूरेनियम 235 के साथ, the uranium 235 absorbs the neutron. और जब यूरेनियम 235 इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, व्हाट विल हैपन इज दैट द इनिशियली जो यूरेनियम था ना 235, दैट वाज स्टेबल, राइट? स्टेबल था, नथिंग वाज गोइंग ऑन विद द यूरेनियम 235. बट व्हेन एन एडिशनल न्यूट्रॉन इज एडेड टू द सिस्टम, जब एक न्यूट्रॉन ऐड किया गया टू द यूरेनियम 235, इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल. एंड व्हेन इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल, fission occurs, right? Initially, the uranium was stable, but when the neutron is absorbed by the uranium, it becomes highly unstable. After this, the uranium-235 splits into two smaller nuclei. In this case, it is splitting into barium and krypton. ठीक है ना? तो yeah, and a ton of energy, right? जो न्यूक्लियर हमारे पास एनर्जी होती है, वेरी अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है विद द स्प्लिटिंग ऑफ द हेवी न्यूक्लियस. तो या, व्हेन इट splits into krypton and barium, along with it releases a lot of energy, and with the energy, three additional neutrons are released as well. ठीक है ना? In this case, of course. अच्छा, जो additional 2 to 3 neutrons in average जो होते हैं ना, they go to other uranium particles, right? Other 235 यूरेनियम के साथ वो जाते हैं and they initiate nuclear fission there. ठीक है ना? आपने इनिशियली एक न्यूट्रॉन से स्टार्ट किया, एक न्यूट्रॉन पंप हुआ यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर, यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन. बेरियम एंड क्रिप्टॉन के साथ वो स्प्लिट हुआ है, तो उसने निकाले हैं तीन न्यूट्रॉन्स. उसने निकाले हैं तीन एडिशनल न्यूट्रॉन्स. अब आगे क्या होगा? ये न्यूट्रॉन्स जो है दे विल स्प्लिट इनटू, इस सारे सिस्टम को निकाल दे. लेट्स लुक एट दिस इंडिविजुअली. ये जो है यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन हिट होएगा, इट विल क्रिएट बेरियम एंड क्रिप्टॉन अगेन, एंड ये तीन और न्यूट्रॉन्स निकालेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, और वो आगे जाके 9 पार्टिकल्स के साथ हिट करेंगे, आगे जाके 9 यूरेनियम्स के साथ हिट करेंगे, एंड इट विल कॉज अ चेन रिएक्शन विच विल ट्रिगर फर्दर फिजन, राइट? तो आपको दिस इज अ डोमिनो इफेक्ट कि अगर एक पीस गिरा तो सारे गिरते जाएंगे. फॉर दिस वी नीड द moderator control rod. ठीक है ना? These two are needed in order to sustain a healthy and a like safe
न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है ना। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टीएनटी। ये एक टीएनटी है एंड अलोंग विद इट आर सेवरल अदर टीएनटीज। ठीक है ना। अगर ये इस टीएनटी को आप ब्लो अप करोगे तो ऑफ कोर्स उसके जो साथ वाले टीएनटी होंगे दोज विल एक्सप्लोड एज वेल, एंड उसके साथ वाले जो टीएनटी होंगे दोज विल एक्सप्लोड एज वेल, है ना। दिस विल कॉज अ चेन रिएक्शन फॉर द ऑल ऑफ द टीएनटीज टू ब्लो अप इन द नियर विसिनिटी। और एक और डोमिनो इफेक्ट भी हो सकता है, राइट। ये आपके पास एक डोमिनो है एंड दिस इज अ बिगर डोमिनो एंड दिस इज अ इवन बिगर डोमिनो। आपने इस डोमिनो को गिराया है, इट collides with this domino and falls over, and this collides with this domino and that falls over. So it causes a chain reaction for the uraniums to cause nuclear fission. So yeah, आपको अभी तक तो समझ आ ही जानी होती है। मैंने तो बहुत अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज समझाया। आई विल रिपीट दिस वन लास्ट टाइम। न्यूक्लियर फिजन जो होती है ना, फ्यूल रॉड इन्वॉल्व्स द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस बाय अ न्यूट्रॉन। A singular neutron is used for initiation, ठीक है ना, which is absorbed by the uranium. And when it is absorbed by the uranium splits into, in this case, only in this case, barium and krypton. It could be any other particle, ठीक है ना। And उसके बाद क्या होता है, these जो particles है, they produce further three more neutrons, and the three other neutrons collide with further uraniums, and those uraniums, what do you call it, turned into barium and krypton, and those krypton and barium then release three more neutrons, and this keeps on going until the moderator, I mean the controller and moderator, like अंदर आते हैं to stop it, और इसको encourage करने के लिए आते हैं। ठीक है ना। यही अगर चलता रहे ना तो यार आगे जाके भी मैं आपको और इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये सारा जो है ना, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। एक्सप्लेन व्हाट, अच्छा अब आपने बताना है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस एज अ कंट्रोल रॉड इज मूव्ड आउट ऑफ द रिएक्टर कोर। अच्छा, जो कंट्रोल रॉड होते हैं ना, इट इज मेड फ्रॉम बोरॉन, बोरॉन से बना होता है, राइट। एंड जो कंट्रोल रॉड होते हैं ना, इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन्स, राइट। अगर आप ऐसे ही जाते रहोगे ना तो इट विल कॉज अ वेरी बिग एक्सप्लोजन। ठीक है ना। बिकॉज अलॉट ऑफ एनर्जी अगर इंक्रीज, आई मीन रिलीज होती गई तो इट विल कॉज एन एक्सप्लोजन। तो भला क्या होता है, जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं ना, वो करते हैं क्या, अगर कंट्रोल रॉड्स को आप नीचे ले जाओगे दे विल स्टार्ट टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स विच विल स्लो डाउन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है ना। और अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो द व्हाट डू यू कॉल इट, the nuclear fission will be encouraged, ठीक है ना, which will cause further fission। तो या lesser, less fewer neutrons absorbed or more neutrons to cause fission, more energy produced or higher temperature or more fission occurs। ठीक है ना, more fission will occur if the control rods are taken out। क्योंकि कंट्रोल रॉड्स वो करते क्या है, प्राइमरीली कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं, बीच में आके दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स टू नॉट कॉज फर्दर न्यूक्लियर फिशन। आगे देखते हैं, इसको जरा एक्सपांड कर देते हैं ताकि द न्यूक्लियर, अच्छा एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आपको एक चीज सिखा दूं कि फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली स्टार्ट किया है तीन न्यूट्रॉन से, आपने ये इसको आपने फिजन एक न्यूट्रॉन से स्टार्ट की है, that turns into 3, that turns into 9, that will turn into 27। तो अगर हम इसको जाते रहने दें, मतलब इसको हम इंक्रीज होने देते हैं, तो what will happen is the 3 will turn into 9, the 9 will turn into 27, the 27 will turn into 81 से 234, 729, 2187, 6
5, 6, 1, आगे जाते रहे. After just a couple reactions, what will happen is you will have 10 billion reactions. So can you imagine, like, after 20, 30 reactions, what will happen is we will have 10 billion reactions, right? तो यही तो होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर. न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यही तो होता है कि उसके अंदर कोई मॉडरेटर या वो नहीं लगा होता है, कंट्रोल रॉड्स. उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, उसके अंदर एक अनकंट्रोल्ड सिस्टम होता है. अनकंट्रोल्ड सिस्टम इन अ वे कि जो न्यूट्रॉन्स को रोकने की फैसिलिटी होती है ना हमारे पास इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर नहीं होती है. तो दैट रिएक्शन कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई होता रहता है, एंड इन अ स्प्लिट सेकेंड our city is destroyed. So yeah, that was a fun fact. The nuclear reactor releases energy at a steady rate by referring to neutrons. Describe what is happening to achieve the steady rate. To achieve the steady rate, okay, ठीक है ना. तो जब हम ना एक सर्टेन पॉइंट के बाद पहुंच जाएंगे, एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे, वी विल ओनली नीड वन न्यूट्रॉन टू बी हिटिंग वन यूरेनियम पार्टिकल. We will only need one neutron to be hitting one uranium particle, and the additional uranium, I mean, the additional neutrons should be absorbed by the control rods to sustain a steady rate of reaction. On average, only one neutron produced by each fission goes on to another nucleus to fission, or additional neutrons are absorbed by the control rods. Yes. आप इसको इंक्रीज करने के लिए रहने तो नहीं दे सकते कि इंक्रीज करता रहे. फॉर एग्जाम्पल, you reach a point of 600 million reactions per minute. तो आपको सिर्फ 600 मिलियन रिएक्शन ही चाहिए होंगे. यू विल नॉट नीड मोर देन दैट. एंड द एडिशनल जो न्यूट्रॉन्स होंगे ना, दैट विल नॉट कीप ऑन मल्टीप्लाइंग द reactions. What will happen is the additional neutrons will be absorbed by the control rods. Explain the purpose of the moderator in the nuclear reactor. The purpose of the moderator in the nuclear reactor is to help slow down. जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उनको स्लो डाउन करता है, to produce fission, to sustain the chain reaction, to encourage the chain reaction. The moderator is used. So that is a pretty simple. Slow down the neutrons so they have a larger chance of being absorbed by another uranium nucleus. As simple as that. It's very simple. So yeah, I I hope you understood that. That was a very thorough explanation of this whole question. That is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.